Hello students. Well, in today's science exploration, we are going to learn about pH value. Okay, कि कोई लिक्विड जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, राइट? और इसके अलावा जो है हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो है मोलिकुलर स्केल पर जो है कैसे वाटर एक्विलिब्रियम जो है पीएच के हिसाब से वेरी करता है। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम और वाटर का एक पर्टिकुलर पीएच पर जो कंसंट्रेशन है वो चेकआउट करेंगे, राइट? और साथ साथ जो है हम लोग ये भी प्रिडिक्ट करना सीखेंगे कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं, ओके, किसी भी लिक्विड को और या फिर उसकी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से जो है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोनियम और वाटर के कंसंट्रेशन में क्या असर पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड चेक आउट दिस सिमुलेशंस। सो वेल वी हैव द लिक्विड वाटर हियर। नहीं नहीं, let's keep it at like half liter, right? Now I will, or we will check, we'll add some battery acid into it, and its pH value is now 1, so it's like highly acidic. Blood add करने पर it's like pH is 7.40, so it's slightly basic now. Blood की जगह पर हम chicken soup add करते हैं अगर, so chicken soup is again slightly acidic. Its pH value is 5.80. Coffee डाल के देखें, well, its pH value is 5, so coffee is also acidic. Drain cleaner, well, its pH value is 13, so it's highly basic. That's why it has very corrosive effect as well. Hand soap, its pH value is 10, so it's again basic. अब बताइए मिल्क जो है वो एसिडिक है या बेसिक है? मेक योर गेस. ऑरेंज जूस एसिडिक या बेसिक? It has pH value of 3.50, so you can make your guess easily. Soda pop, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप लोग पीते हैं ना, that's highly acidic. Spit, हम अपने मुंह से जो फेंकते हैं ना थूक, so our spit is slightly basic. Vomit, highly acidic, because हमारे पेट से निकलता है ना, पेट में तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है ना, इस वजह से. Water, it has a pH value of 7. Now we are going to do one more thing. Let's say that we add battery acid, right? It's highly acidic, right? Let us add some water to this liquid and see if it affects the concentration, right? बेसिकली हम जितना पानी इसमें ऐड करते जा रहे हैं उतना एसिड जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है. Now we are going to some simple material here. So it has a pH value of 1. Now let's add some water to it. So well, this activity shows us at the macro level what happens to the pH value of a liquid, right? और किस तरह के मटेरियल को ऐड करने पर pH value में क्या changes आते हैं, right? Now let's try the same thing, or like let's try another activity where we will also check out
the ratio of different particles present in water. Now you know that water is pure, pure water is what? H2O, right? And H3O, this is hydronium, and OH, this is called, hydroxyl hydroxide. So we have identified these micromolecules here. Concentration level भी हम check कर लेते हैं. Okay, so we already have water here. Let us add some battery acid to it. Battery acid ऐड करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं H2O का concentration, and then we have this here, hydroxide, and then here we have hydrogen. Instead of battery acid, let me add blood. Let us add vomit to it. It's acidic, you can see the changes now. Spit, soda pop. Basically, we see that the presence of hydronium increases when it's acidic. Orange juice, milk, hand soap. हाइड्रोक्साइड का क्वांटिटी जो है वो बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन, और यहाँ पर हाइड्रोनियम का जो है कंसंट्रेशन वो घट रहा है. कॉफी, back to acid. Alright, let me remove the particle count, that will make it cleaner, and then add it again. So that way we have seen that how the acidic or basic nature of a solution also has different concentration of H2O, H3O, and OH in it, right? So this was an interesting session, I hope. Bye bye.